गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्योर सेमीकंडक्टर एंड impure semiconductor. So before going to start the concept of pure semiconductor and impure semiconductor, first of all we have to go through some basic concepts of semiconductors, so can we will understand how pure semiconductor can be formed, and from pure semiconductor how I can design an impure semiconductor. So जैसा कि हम लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंडर जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक बॉन्डिंग ऑफ द एटॉमिक बॉन्डिंग ऑफ द मैटर. सो टोटल जो सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये जो एटॉमिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको मिलता है फ्रॉम द from the Bohr's atomic structure. That is Bohr's atomic structure. So what do you mean by Bohr's atomic structure? Sorry. So what do you mean by Bohr's atomic structure? As we all knew very well in our previous academic curriculum in class 11, 12, that is Niels Bohr, Danish physicist, developed a clear picture of atomic structure. So depending on that atomic structure, I can classify the conductor, semiconductor, insulator, as well as the conductivity of a material, as well as how a material can conduct the current inside it, what is the procedure, what are the procedure. So all are coming from Bohr's atomic structure. So firstly, we have to know about Bohr atomic structure. The very first point of Bohr atomic structure is an atom consists of nucleus which contain neutrons and protons. That means एक एटम जो है वो क्या करता है, उसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर दो पार्टिकल रहता है, एक है न्यूट्रॉन्स एंड दूसरा है प्रोटॉन्स. सो हम लोगों को पता है न्यूट्रल्स न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रल न्यूट्रल इन नेचर, और जो प्रोटॉन्स है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. सो नाउ नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है कि न्यूक्लियस एक एटम के एक मटेरियल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन है दैट मींस न्यूट्रल इंडिकेट जीरो and positive charge indicates positive, so it will gives you zero combined with positive will gives you positively charged. But we know that at neutral condition, at initial stage, every particle except radioactive elements are neutral in nature. So obviously मेरा न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज carried by electrons. सो बोर ने यही कहा है कि बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर ने यही कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, ये क्या करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग अराउंड nucleus in
different orbits. Okay. नेक्स्ट थर्ड, सो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है। जो न्यूक्लियस है डेट इज ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट पे ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। सो दैट्स व्हाई एंड दिस पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पार्टिकल विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर रेंज में ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल नहीं पाता है। दैट इज, यू कैन से द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इलेक्ट्रॉन को जो है पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता नहीं है उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाने के लिए। सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज एट पॉजिटिव चार्ज attracts negative charge, and we need and here there is a centrifugal force uh, is present there to balance the attraction of the nucleus. ताकि centrifugal force is developed in such a way that if the attraction is not so high that electron will leave its orbit and attach with the nucleus, and the centrifugal force is not too loose that electron will leave the orbit and moved out from the atom, or move out from its orbit. So fourth point is electrons in each permitted orbit have a certain fixed amount of energy. That means इलेक्ट्रॉन जो अपना ये ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, अपना अपना ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो अपना अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल है कि पर्टिकुलर इस ऑर्बिट के लिए, इस ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस को सेंटर करके उसका एनर्जी सेम है। इस ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा अराउंड बाय इन बाय सेंटरिंग द न्यूक्लियस, इसका एनर्जी सेम होगा। बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन ने बोर ने कहा है, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर ने ये कहा है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसका आउटर मोस्ट, तो ये मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दो ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द second one, this in the outermost orbit and the first one is the innermost orbit। तो ये जो outermost orbit है, अगर कहीं एडिशनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और अदर रेडिएशन आर गिवन, दैट मीन्स एडिशनल एनर्जी अगर यहाँ से दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और radiation, then what will happen, the outermost orbit का जो इलेक्ट्रॉन है, in the outermost orbit will get excited। जैसे सपोज अगर हम एक नॉर्मल एक आयरन रॉड को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में पकड़ेंगे, वी विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ एक्साइटेशन इनसाइड द आयरन। बट इफ आई विल गिव हीट फ्रॉम द external sources, then what happen, the atomic structure, the outermost
ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, that electron will get excited, and due to this excitation electron will try to move outside the orbit, and due to which the atomic structure of the matter will get disturbed, और जिसके चलते हम लोग देखते हैं अगर आयरन रॉड को टू मच हीट किया जाता है तो उसका अंदर का जो एटॉमिक बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट जाता है, एंड ड्यू टू दिस ब्रोकेज ऑफ द एटॉमिक बॉन्ड धीरे धीरे वो क्या क्या करता है, अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो ये पांच जो पॉइंट है, ये बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का पॉइंट जो है, ये हाईली रिलेटेड टू फॉर्मिंग अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर टाइप material. Okay, so now depending, as I said, के energy state. Okay, next topic is energy state or energy level. Energy level. So as I told that यहाँ इस ऑर्बिट में, लेट इट बी ऑर्बिट वन एंड ऑर्बिट टू, सो ऑर्बिट वन का जो इलेक्ट्रॉन है इस ये जिस एनर्जी में रिवॉल्व करेगा या रोटेट करेगा न्यूक्लियस को सेंटर करके, ऑब्वियसली ऑर्बिट टू का इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी में रोटेट नहीं करेगा, उसका एनर्जी अलग होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन हैज और the negative charge particles has different energy levels। ठीक है, और ये एनर्जी लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी लेवल बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, so these four parameters are highly related to find out at which energy level of the atom the electron will achieve to rotate on its orbit by centering the nucleus। ओके, सो जैसा कि एज एन सबसे बढ़िया एग्जांपल है आवर सोलर सिस्टम, लाइक द अर्थ विल टेक 24 hours to move to rotate on its own axis, and 365 days to rotate around the rotate on its orbit. So obviously if we will shift from earth to any other planets like Saturn, Mars, so we will see that their rotation speed, their timed period to rotate the sun on their own orbits is very different to each other। Okay, so that is the main things, that energy level through which we can decided electron will rotate on which orbit and at which speed electron can rotate on its own orbit। So this is known as energy level of an atom, and we will see that it is depending on a numerical formula, or a numerical formula is established to define the energy level, which indicates mvr equal to nh by 2 pi, because orbit is elliptical in shape, to 2 pi terms is there, where m is the mass of electron, v is the speed of electron in its circular path, r the radius of the orbit, h is the Planck constant, Planck's constant, and which is fixed, that is 6, we know that 6.63
into 10 to the power minus 34 joule second, and n is the integer, that is what number of orbits. One, if orbit is 1, then it is 1. If orbit is 2, we will put 2. If orbit is 3, we will put 3. So n is simply integer. So we will not go in detail of this calculation of energy level, which is because it is irrelevant as per the syllabus of the JOD. But we have to know how energy level is related to select the orbit. So try to remember this formula. Very rare chance that JOD will ask this formula, but you have to know, because now we are moving to find out the energy band, or find out we will going to the energy band concept. So next is energy band. Energy band. And in energy band also we will see that different matters or different materials have different energy band. Like if अगर हम लोग गैसियस एलिमेंट को देखेंगे तो गैसियस एलिमेंट का एनर्जी बैंड अलग होगा, लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड का एनर्जी बैंड अलग होगा, सॉलिड को देखेंगे तो सॉलिड का एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट अलग होगा. So in this video or in this course we will only concentrate on the energy band of the solid. बिकॉज मैं पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में कह चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो भी कंसीडर करेंगे दैट इज ऑन basis of the solid, because semiconductor device, semiconductor material is nothing but a part of solid. So now if we are considering the energy band of solid, we will see that there are three types of energy, or I can say two types and three parts of energy band. That is, say first one is valence band, second one is conduction band, third one is third part is forbidden energy gap. Okay, so the total classification of solid with respect to its electrical conduction properties, this energy band is closely connected, or I can say, depending upon the energy band, the solid can be classified as the insulator, conductor, and semiconductor. Now we will see how a solid can be classified as inductor, insulator, sorry, insulator, conductor, and semiconductor depend on the energy band of the solid. This is a very important question which may be asked in the semester also. So if draw the we draw the energy band concept, just a minute. If we draw the band energy band concept, just a minute. Energy band concept, and this y axis indicates band energy, band energy, and x axis indicates
the age of nucleus. That is, there is no practical meaning of age of nucleus, but we are going to construct the band energy band by this diagram. So now this is not this is age axis because age of nucleus, because below this the nucleus particle are there, electrons in not except the outermost cell or electrons are present is there, so this electron will not take part of any conduction. We know that only electrons in outermost cell will be the part of conduction. So above this this is the outermost cell. Okay, so now there are three parts, that is, this is conduction band, conduction band, and the below one is valence band, and in between conduction band and valence band there is forbidden energy gap. So these three part mainly consist in energy band of solid. So now this valence band and conduction band. So see, this below this line is the electrons orbit or except the outermost cell. So we see that most of the electrons or the all the electrons which are responsible to conduct the current are found in the valence band, and after getting excited the electron will move from valence band to conduction band, and due to this movement of electron from valence band to conduction band a current will be generated, because we know from our basic concept that current will produce by the will be produced by the movement of electrons, and the direction of current is totally opposite of the direction of electrons. So in this case, we see that from valence band to conduction band, electrons will move after getting excited or after reaching its excitation state. So obviously the current will move from conduction band to valence band. So this is the basic concept of different energy bands of solid, and according to this our types of materials will be decided, or types of solid will be decided. Now we will see how depending on the valence energy band, or how dependent on the different energy bands in solid, how can be solid classified into different categories. So question is, depending on depending on different energy band, different energy bands, how can we classify the solids, sorry solids, sorry classify the solids in terms of insulator, insulator, conductor, and
semiconductor. So this is the question you may face in the semester exam also. This is a very important question because this is the basic concept to classify the solid depending upon the different energy band. So as we know that when energy band consists of three parts, that is the uppermost is conduction band, we are saying CB, lower part is valence band, I'm giving it VB, and in between this forbidden energy gap. So now what happened whenever we are going to give some sources in the form of heat, lights or radiation, the outermost cell, that means the valence band, which consists of electrons, free electrons, that is that electrons are ready to move. So the free electrons will get excited. And due to this excitement, the electron will try to leave the वैलेंस बैंड एंड लीव करके वो लोग कहाँ जाएगा जंप टू कंडक्शन बैंड सो ड्यू टू दिस जंप valence or vacant place will be created in its place due to this jump. Now electron is moving from valence band to conduction band, so its place is become vacant. So due to this vacancy, hole will be generated. That means we are going to establish a new concept of holes. That is, we know that electrons are negatively charged. Okay, so we see electron carries negative charge. So if electron will move from one place to another place, a vacant place will be created. So we all know that absence of electron or absence of negative is known as positive. So absence of negative charge is known as positive charge. So due to movement of this electron, due to creation of this vacant place, a negative uh, place or a hole will be created. Absence of electron will be created, which is considered as positively charged. So in now we are going through another concept, that is holes. That is holes, keep in mind that holes are not protons, as we know that protons are positively charged, and here we are seeing that holes also positively charged. So yeah, a concept maybe rises in our mind that holes are protons, but no, holes are not protons. Holes, basically the holes will be created by the absence of electron. If electron will move from one place to another place, then it's in its previous place a vacant space will be there, which is nothing but absence of negative. So obviously we know that if there is a absence of negative, so automatically a positive charge will be generated there. So this holes is not related to protons, but this holes will carry positive charge. So due to this movement, valence electron, that means these electrons are ready to vacant their place. Valence electron will move from valence band to conduction band. Due to this movement, a current will flow from conduction band to valence band. So that's why this conduction band is named as conduction band, because अगर मेरा इस बैंड में कुछ भी हरकत हो रहा है, ड्यू टू दिस हरकत करंट विल फ्लो, कंडक्शन विल बी स्टार्टेड. सो ये बैंड के चलते ही मेरा कंडक्शन हो रहा है. सो दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड. एंड दिस वैलेंस बैंड के अंदर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू leave their place if some external sources will be given in the form of heat or light or radiation. So that is the main reason behind the name of this band. So अगर हम लोग एग्जाम में बहुत बार ये confusion होता है कि
कि हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, ऊपर वैलेंस बैंड लिख देते हैं और नीचे कंडक्शन बैंड लिख देते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड एनर्जी बैंड इज नोन एज एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, मेंटेन द अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजी। लाइक यहाँ कंडक्शन बैंड का स्टार्टिंग क्या है, सी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड का स्टार्टिंग क्या है, एफ, एंड वैलेंस बैंड का स्टार्टिंग है वी। तो सी पहले आता है तो सबसे ऊपर रहेगा कंडक्शन बैंड, वी सबसे नीचे आता है तो सबसे नीचे रहेगा वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में एज वी नो दैट फॉरबिडन एनर्जी गैप। नाउ कम टू द क्वेश्चन, that is how electron depending on the energy band, particle can be classified into different categories like conductor, insulator as well as semiconductor. So see, if अगर suppose मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग छलांग लगाते हैं, तो सपोज अगर बरसात के टाइम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी कहीं पे अगर जमा होता है तो हम ब्रिक्स लगा देते हैं लाइक दिस। तो सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर मुझे ये ब्रिक्स का डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं, बीच में ये ब्रिक्स ना रखूं, तो दिस इज द फर्स्ट ब्रिक, दिस इज द सेकेंड ब्रिक, तो इसका डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू फॉर मी टू जंप फ्रॉम दिस वन टू सेकेंड ब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं जितना भी छलांग लगाऊंगा मैं सेकेंड ब्रिज तक, ब्रिक तक पहुंच नहीं पाऊंगा। सो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड से करंट यहाँ नहीं आ पाएगा, तो in that case conduction will not be there, so that element is known as insulator, जहां पे मेरा gap between valence band and conduction band is too high that electron can't jump from valence band to conduction band after getting excited. So that's why if electron will not jump, if electron will not jump to conduction band, obviously no current will come from conduction band to valence band, so there will be no conduction. So this particle is known as insulator. Now अगर मैं क्या करता हूं, ये दो ब्रिक्स को एक साथ लगा देता हूं, ठीक है, ब्रिक वन, ब्रिक टू। नाउ यहाँ पे मैं एज इट इज खड़ा हूं, तो इट इज क्वाइट इजी फॉर मी टू मूव फ्रॉम ब्रिक वन टू ब्रिक टू। ठीक है, सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर, दैट इज द बैंड गैप is too close or there is no band gap, forbidden energy gap is too close, the gap between conduction band is too close, or there is no gap, so that's why electron can easily move from one place to another place, from one band to another band. If electron will move from valence to conduction band, obviously current will flow from conduction band to valence band. So easily electron can move. So this type of material is known as conductor. Now मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ब्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस एक ऐसे डिसाइड कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से छलांग ना लगा पाऊं, बट मुझे थोड़ा सा एनर्जी लेके छलांग लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, शुरू में क्या करता है, अगर मैं नॉर्मली छलांग लगाऊं तो विदाउट गेटिंग एनी एनर्जी आई कांट अचीव दैट ब्रिक टू, but if I will get some energy and with energy I am going to jump from brick 1 to 2, then easily I can reach to brick 2, and if ब्रिक टू में अगर मैं पहुंच गया तो ऑब्वियसली अगर मैं इलेक्ट्रॉन के साथ इसको कंपेयर करूंगा, इफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड आफ्टर गेटिंग एक्साइटेड विथ सम एक्स्ट्रा एनर्जी, then obviously a current will flow from conduction band to valence band, and if current will flow, then the material is known as सेमी कंडक्टर, दैट इज शुरू में ये खुद से कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी मिले तो वो क्या करेगा, वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर देगा। तो इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर
S- Semiconductor and conductor। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों से बहुत बार ये गलती होता है, मेनली स्टूडेंट्स है, कि एग्जाम में हम लोग थ्योरी लिखते हैं, बहुत अच्छा से थ्योरी लिखते हैं, लेकिन अगर मैं डायग्राम नहीं दूंगा तो इट विल गेट अफेक्ट ऑन योर मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही इसमें कर रहा हूँ, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, सिमिलरली मैं तीनों के लिए भी ये कर दे रहा हूँ, तीनों के लिए। तो नाउ इसका एक डिस्टेंस, कि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो फॉर इंसुलेटर इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये वैरी करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अगर मेरा बैंड गैप रह गया, तो ऑब्वियसली दिस बैंड गैप, ऑब्वियसली द मटेरियल विल एक्ट एज योर insulator। नाउ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ऑब्वियसली ये गैप जो है विथ रेस्पेक्ट टू दिस बहुत ही कम होगा, बट एकदम क्लोज नहीं होगा वैलेंस बैंड, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो ऑब्वियसली मुझे ये टर्म यूज करना है कि सेमीकंडक्टर में भी ये बैंड गैप कितना होगा। तो ये बैंड गैप नॉट greater than 3 electron volt, but from 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वैरी करता है। ऑब्वियसली हम लोग कभी कभी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी देखते हैं कि वो कंडक्ट करता है, बट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी मोर एक्साइटेड। बट इन जनरल 0.7 वोल्ट, क्योंकि 0.7 वोल्ट हम लोग ले रहे हैं क्योंकि जार्मेनियम का बैंड गैप 0.7 वोल्ट है, ठीक है, एंड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देयर इज नो बैंड गैप between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर में दो सिचुएशन क्रिएट होता है, एक, देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दूसरा है कि एक दूसरे के साथ, ये रेड वाला मैं डिफाइन कर रहा हूँ वैलेंस बैंड को, और ब्लैक वाला मैं डिफाइन कर रहा हूँ कंडक्शन बैंड को। तो दिस इज द कंडक्शन बैंड, this is the conduction band, and red one is the valence band। तो सेमीकंडक्टर का दूसरा कंडीशन क्या है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। in this case also in this case also your electron can easily move from valence band to conduction band। So this is all about semiconductor में ये this is all about your classification of material depending upon the band gap energy। Now in next video हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो एटॉमिक बॉन्डिंग होता है वो कैसे होता है, एंड व्हाट हैपेंड इफ एक्सटर्नल sources will be given to them, and due to this external source how a semiconductor can behave like a pure one as an impure one। So that's all for this video।
We will see in next video. Thank you all.